everybody would need some kind of assistance as to which college we should be applying based on the estimated percentile that we'll be getting or exact percentile that we have obtained in the results of CAT 2025. प्रोफाइल बेस्ड कॉल्स की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो येस डेफिनेटली अगर आपका प्रोफाइल बहुत ज्यादा अच्छा है तो आपको 85 परसेंटाइल एक बेयर मिनिमम क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना होता है टू गेट अ प्रोफाइल बेस्ड कॉल ऑफ एसपी जैन। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोर्स है तो डेफिनेटली इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो बहुत बढ़िया होगा एंड रेपुटेशन भी इसकी अबव एवरेज है। अगर आपकी परसेंटाइल थोड़ी सी ज्यादा आ जाती है देन एटलीस्ट आपके पास कुछ अच्छे कॉलेजेस होंगे जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो, जिससे आपको कॉल आ सकता है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अब कैट ओवर हो चुका है, 30th नवंबर इज गॉन एंड ऑल ऑफ यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर द रिमेनिंग एग्जामिनेशंस। स्नैप का एग्जाम बचा है, ज़ैट का एग्जाम, देन आफ्टर दैट देयर आर 1 or 2 मोर एग्जामिनेशंस। बट इस टाइम पे आप लोगों को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, we have come up with that session. So friends, after CAT is over, आपका जो रिस्पॉन्स शीट है वो आ चुकी है, आपके पास आपके एस्टिमेटेड स्कोर्स हैं जो आपने CAT में ऑब्टेन कर सकते हो। Now while we are waiting for the CAT results to come out, or even once CAT results are out, everybody would need some kind of assistance as to which college we should be applying based on the estimated percentile that we'll be getting or exact percentile that we have obtained in the results of CAT 2025. So my dear friends, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपका परसेंटाइल 75 परसेंटाइल से ऊपर है, somewhere around 80 percentile, 85 percentile or in the bracket of 85 to 90, 90 to 95, तो कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो हमें अप्लाई करने चाहिए। Right now, while applying for these colleges, what all things we need to take care, हमें क्या क्या गलतियां हैं जो अवॉइड करनी चाहिए, जीडीपीआई की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करनी चाहिए, जीडीपीआई के लिए क्या क्या यूज होता है, प्रोफाइल का क्या यूसेज है, ये सारी चीजें ब्रीफली हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है the type of colleges, the bracket in which our percentile is falling, ये दोनों चीजें मैप होनी चाहिए, करेक्टली मैप होनी चाहिए, इनके बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अदरवाइज जिस कॉलेज में हमने अप्लाई किया है ऐसा भी हो सकता है उस कॉलेज से हमें कॉल ना आए, या फिर जो हमारी परसेंटाइल आ गई है, we have got good percentile but we have applied to the colleges which are falling below the range of the percentile that we have scored. So correct mapping बहुत ज्यादा जरूरी है in order to make sure that you are sitting in a good B school of the country. All right, so let's begin with today's session with the small agenda. So first of all we'll be understanding the CAT percentile ranges. So range क्या क्या हो सकती है, किस किस ब्रैकेट में हम फॉल कर सकते हैं। Then we'll be having tier wise B school options. So I have divided it in different groups, different categories based on their percentiles, and will be telling you the top colleges or different colleges which will fall in the bracket of 80 to 100 percentile. So 80 to 100 percentile का ब्रैकेट मैंने आज कंसिडर किया है and I have divided this entire range in small and different ranges. Then we'll be talking about some selection criteria and the strategy and the final tips. Final tips will include कि भाई क्या क्या गलतियां हम करते हैं generally जो हमें avoid करनी चाहिए, right? So let's begin, and the percentile bands that I have divided this range into is, first of all we'll be talking about the colleges which are above 99 percentile. अब यार above 99 percentile वाले colleges ये तो आपको complete idea होगा, everybody talks about these colleges. Also the second band, the second range is 95 to 99 percentile. So once again a lot of people talks about these colleges because these are the colleges which are I can say that top 15, top 20 B schools in the world, in the country, I'm sorry. And जब एक स्टूडेंट MBA की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, CAT की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, so these are the colleges which are the dream colleges. But friends, unfortunately not everyone is able to achieve that dream that you have seen at the beginning of your preparation. So does not matter, but we should be realistic about the percentile that we are going to achieve in the during the results of CAT 2025.
तो ठीक है, we are unable to fall in this range, but yes, we are thinking that our percentile might be in the range of 90 to 95, or it may be falling in the range of 80 to 90 percentile. So accordingly we should equip ourselves. हमें उन कॉलेजेस का रियलिस्टिकली इंफॉर्मेशन होना चाहिए, नाम पता होने चाहिए। काफी सारे ऐसे कॉलेजेस मैं बताने वाला हूं जिसके हम लोगों ने नाम भी शायद ना सुने हो, बट दे आर good colleges as far as the placements and as far as the growth opportunities are concerned. ठीक है, so we'll be talking about these colleges one by one falling in these ranges. Now tier 1, tier 2 and tier 3, generally this is how the colleges are divided. Now tier 1 के जो colleges होते हैं, they are top IIMs and elite institutes like IITs, FMS, XLRI, Jamnalal Bajaj Institute of Management Studies, right? So we'll be rarely talking about these colleges which are lying at the top, but हम ज्यादा time spend करेंगे उन कॉलेजेस पे जो 95 से नीचे वाली परसेंटाइल पे हमें मिल सकते हैं। देन टीयर 2 के कॉलेजेस वो कॉलेजेस होते हैं जिनका स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के साथ साथ रेपुटेशन भी एवरेज और अबव एवरेज होती है। नाउ फाइनली टीयर 3 कॉलेजेस जिनका जनरली हमने ज्यादा नाम नहीं सुना होता, बट दे डू ऑफर गुड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड द ग्रोथ पोटेंशियल इन दीज कॉलेजेस इज फैबुलस। तो यहां पे आपको ग्रो करने का चांस बहुत ज्यादा मिलेगा, राइट? सो our first category is the colleges which are in the range of 99 to 100 percentile. Now needless to say their names, needless to mention their names, these colleges are IIM Ahmedabad, IIM A, IIM B and IIM C. Now IIM Lucknow will also lie in this range, right? But obviously at the top are IIM A, B and C. Now with these three IIMs, Faculty of Management Studies जो Delhi University का part है, right? This will also be there, and SPJIMR, SPJN Institute of Management and Research जो मुंबई में है, right? इसके कैंपसेस और जगहों पे भी हैं, दुबई में एक कैंपस है, सिंगापुर में एक कैंपस है, right? But we are talking about SPJN जो मुंबई में situated है, right? नाउ प्रोफाइल बेस्ड कॉल्स की अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो यस डेफिनेटली अगर आपका प्रोफाइल बहुत ज्यादा अच्छा है तो आपको 85 परसेंटाइल एक बेयर मिनिमम क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना होता है टू गेट अ प्रोफाइल बेस्ड कॉल ऑफ SPGen. But if we'll talk about the score based call of SPGen, then definitely it will lie in the range of 98 percentile to 99 percentile, right? अब कुछ कॉलेजेस ऐसे आपको यहां पे मिलेंगे जो फॉर द सेफर साइड मैंने इस रेंज में डाल दिया है, बट डिपेंडिंग अपॉन द प्रोफाइल, डिपेंडिंग अपॉन द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, डिपेंडिंग अपॉन your work experience as well, basically depending upon your overall profile, you may get calls from these colleges at slightly lower percentile as well. ठीक है ना? तो यहां पे ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि SPGen की कॉल 99 प्लस पे ही आएगी, 98 पे नहीं आ सकती। 98 पे आ सकती है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर स्कोर एज वेल एज प्रोफाइल। सो अगर प्रोफाइल बहुत ज्यादा अच्छा है एंड आपका स्कोर 99 की जगह 98.9 है, तो इट मे बी पॉसिबल दैट यू मे गेट अ कॉल फ्रॉम SPGen, राइट? सो अब हमें करना क्या है? सो लेट्स से इफ यू आर थिंकिंग दैट यू विल फॉल इन दिस रेंज, राइट? इस रेंज में आप लाई कर सकते हो, तो ऑब्वियसली आपने कैट का फॉर्म फिल किया है, तो ये तीनों कॉलेजेस कवर्ड हैं, IIM लखनऊ कवर्ड है, राइट? So other than these 4 IIMs, you must also think about, let's say IIM 𝐄𝐒, IIM इंदौर, IIM शिलोंग, ये जो टॉप के IIMs हैं, यहां से आपको डेफिनेटली कॉल्स आ सकते हैं, ओके? So you must also start preparing for the GDPI process of those colleges, right? I'm sure आपने FMS दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर दिया होगा, if the students are thinking कि they will be in this percentile range, right? And then SPGen is another option for all of you, right? Now let's move on to the second bracket. Now the second bracket is so first of all let's talk about profile expectation. अब ये जो टॉप के कॉलेजेस है ना, इनमें प्रोफाइल एक्सपेक्टेशन होता क्या है? तो प्रोफाइल एक्सपेक्टेशन में क्या करते हैं? So they will be requiring strong academics, right? Academic means 10th
12th graduation or any of the professional degrees that you have, CA, CW, ICWA and so on, CS, right? So अगर आपके पास कोई professional degree है, that will also be helpful in this case. Also, work experience is one thing that is preferred. So if I'll compare any two candidates, let's say candidate A and candidate B, candidate A के पास work experience नहीं है, candidate B has, let's say, a relevant work experience of 2 years, and rest everything is same. इनका CAT score same है, इनकी remaining profile academics 10th 12th graduation same है, तो obviously that college will prefer a student having a relevant work experience over the other student. but ये जो work experience है ये preference दी जाती है but mandatory नहीं होता. There are handful of colleges जहां पे work experience mandatory होता है. Now the next thing is diversity and extracurricular activities. So yes, these two things definitely matters, right? So अगर आप niche background से हो, let's say एक college है जहां पे most of the students who have applied are from BTech or BBA background, but you are from BSc background, so you are from biotechnology background. So इस type के students को थोड़ा सा extra weightage मिलता है, the points that you score for diversity. And if your extracurriculars are fabulous, then this is a cherry at the top of the cake, right? So these are the things that will matter in these top colleges, right? Now moving our focus to the next band, 95 to 99 percentile range में कौन-कौन से colleges fall कर सकते हैं. So again ये वाले colleges के definitely नाम सुने होंगे. The top 3 IIMs, the 3 IIMs which fall in top 6, top 7 IIMs, IIM Kozhikode, IIM Indore and IIM Shillong. Now IIM Mumbai जिसका पहले नाम था NITIE, NITI, which was in Mumbai. Okay, so NITI, which was converted to IIM Mumbai, this is the youngest member, but IIM Mumbai का brand बहुत ही amazing है, and this can be kept in the top few IIMs of the country, right? Now after that, MDI Gurgaon, Management Development Institute Gurgaon, IIT Bombay, Sailesh J Mehta School of Management, right? IFT Delhi and Kolkata, IIT Delhi जिसका नाम है Department of Management Studies, IIT Madras, and then some of the second generation IIMs from which you can expect a call from. So IIM Ranchi, Rohtak, Raipur, Trichy, Udaipur, like these second generation IIMs, यहाँ से भी आपको 95 percentile के ऊपर स्कोर पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो call from these colleges, right? Now the next category 90 to 95, right? अब हमने 95 के ऊपर वाली कैटेगरी तो देख लिया है. Now majority of us will be lying in this category, okay? 90 से 95 percentile की कैटेगरी में हम lie कर रहे हैं अगर, so these are some colleges that we can think about, okay? Now एक general rule बताऊंगा मैं आपको, general rule about application criteria, about filling up the form, but first of all we'll talk about these colleges quickly. So at this percentile or in this percentile range, you can think about baby IIMs. So baby IIMs like Amritsar, Nagpur, Vishakhapatnam, Jammu, Sirmaur, Sambhalpur, Bodh Gaya, etc. Right? The next one is IMI, which is in Delhi University. Okay. Next one is IMT Ghaziabad. IMT के और भी campuses हैं, but IMT Ghaziabad की जो reputation है, that is over and above the reputation of the other IMTs like IMT Nagpur, IMT Hyderabad, IMT Dubai में भी खुल चुका है, right? So IMT के बहुत सारे campuses हैं, but IMT Ghaziabad is the best among those IMTs, right? Then XIM Bhubaneswar is one college that you can target at a percentile of 90. Then TAPME in Manipal, KJ Somaiya in Mumbai, Goa Institute of Management, Great Lakes Institute of Management, which is in Chennai. The next one is Ford School of Management. And finally, we have MICA, which is in Ahmedabad. अब माइका के लिए एक अलग एग्जाम भी होता है, MICAT. So you will have to look at the eligibility criteria and the selection procedure for MICAT. But yes, this is a wonderful college that you can target.
if you are lying in this bracket 90 to 95 percentile, right? Now friends, the next bracket. The next bracket, once again, in which maximum number of students will be falling. So the next bracket will include a lot of colleges and you will find some overlap. Like KJ Somaiya, generally अगर आप देखोगे जनरल कैटेगरी के लिए परसेंटाइल कट ऑफ 90 से अबव होती है, बट ये परसेंटाइल जो कट ऑफ है ये थोड़ा बहुत रिलैक्स भी हो जाता है फॉर अदर कैटेगरीज, राइट? सो यू विल फाइंड सम ऑफ द कॉलेजेस विच आर लाइंग इन दिस, जो एकदम बॉर्डर लाइन पे लाई करते हैं 90 परसेंटाइल, देन उनकी कट ऑफ 89 88 के आसपास भी हो सकती है. सो देयर विल बी सम कॉलेजेस which may fall somewhere at the border line of 80 to 90 and 90 to 95. तो आप दोनों जगहों पे इनको कंसिडर कर सकते हो. So the colleges which are in this category, let's talk about these. So TAPMI Manipal, already मैंने बताया आपको, KJ Somaiya, GIM, Goa, Great Lakes Institute of Management, right? Now the next name is Ford School of Management, which is situated in New Delhi. The next name is Lal Bahadur Shastri Institute of Management Studies, which has done fabulous over the last decade. Last 10 years में इसकी reputation increase हुई है. And once again, this college is situated in Delhi. The next name is Institute of Rural Management, which is situated in Anand, Gujarat. So, if let's say your background is of this type, rural management, microfinancing, agri-based, okay, so you can target this particular college, which is situated in Gujarat. The next name is BIM, which is situated in Trichy. Next one is IFMR Graduate School of Management, right? The next name is NIT Trichy, National Institute of Technology Trichy. Then the next name is Sydenham Institute of Management and Studies, which is commonly known as SIMSRI, which is situated in Mumbai once again. IIFM, which is situated in Bhopal, Forest Management, a wonderful college with a wonderful return on investment. The next name is Wellington Institute of Management. ये नाम definitely सुना होगा आप लोगों ने. Wellington, which is situated in Mumbai, and this has other campuses as well, but I would recommend Mumbai campus only. The next name is Loyola Institute of Business Administration, LIBA, which is situated in Chennai, right? Now, the next three names are not colleges as per, these are courses offered by Delhi University. So DFS, Department of Financial Studies, DBE, Department of Business Economics, MIB related to management in international business, and then this one is management in human resources. Now all these courses are offered by Delhi universities. So Delhi University का कोर्स है तो डेफिनेटली इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो बहुत बढ़िया होगा एंड रेपुटेशन भी इसकी अबव एवरेज है, राइट? So these are some names in the range of 80 to 90 percentile, right? Now looking at some of the names which have high rate of return on investment, and these are all non-IIM colleges. So we have already seen these three names: DFS, DBE, MIB and MHROD. Then another name is UBS Chandigarh. UBS Chandigarh generally falls in the range of somewhere around 85 percentile, right? And once again, SIMSRI Mumbai, this has a wonderful return on investment, right? So if you are looking at those colleges whose fees are very less and their pay packages are above average, then you can look for these names, right? Now friends, I was telling you about a rule using which you should be filling up the form, right? So let's talk about all these things. So first of all, beyond CAT percentile, what all things are required that you need to prepare for, right? So beyond CAT percentile, one thing that will be required obviously is your performance in the second stage of selection procedure. Okay, now second stage you may face a group discussion, a personal interview, you may face an extempore, you may face a case study, right? So there can be different things that may be tested at the time of your group discussion PI.
Now, VAT, a lot of colleges have started with VAT. It's been a lot of time. So IIMs में तो आपको VAT दिखेगा ही, which is the written ability test, that is essay writing, right? Now, for all these things to perform in all these things, your journal knowledge, your journal awareness, your current affairs, all of them should be fabulous, right? So if you want to do good at the second stage, start reading from now onwards. Next thing is academic consistency. So a student who is consistent throughout his academics, right? 10th में अच्छे marks आए हैं, followed by 12th as well as graduation. So those type of students are generally considered over the students who have shown an inconsistency in their academics. The next thing is work experience. We have already discussed about this. And the next factor is diversity factor. Once again, we have already discussed about diversity. All right. Now, moving forward, the role of work experience. Now, I have already explained कि work experience कितना ज़्यादा important होता है, but एक random work experience और एक relevant work experience बहुत ज़्यादा different होता है, right? So let's say you are a student from an engineering background and you have worked for 2 years on a role of software engineer, and you are applying in a college in a course or in a specialization which is related to, let's say, finance. Now, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम किया है, मैंने अभी तक कोडिंग किया है, एंड I'm looking forward for a role in finance. तो भाई ये मिसमैच है ना थोड़ा सा, okay? So in case let's say your background, your graduation or your work experience is somehow related to finance, and you are looking for a college in which the specialization of finance is offered, you are looking to do an MBA in finance, then both these things will complement each other. Your work experience, your studies, your extracurricular activities, your co-curricular activities should be such that they should complement the specialization that you are going to take during your MBA. ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि जबरदस्ती ये जरूरी होना चाहिए, बट अगर ऐसा है तो आपको डेफिनेटली जो ब्राउनी पॉइंट्स होते हैं ना वो स्कोर करने को मिलेंगे इन द सेकंड स्टेज ऑफ सिलेक्शन क्राइटेरिया, राइट? ओके, नाउ duration of work experience which is ideal is somewhere between 12 to 36 months. Generally 12 months से नीचे का work experience consider नहीं किया जाता, right? And 36 months के ऊपर का, 3 years के ऊपर का जो work experience है, generally it is taken as a negative factor. ठीक है, right? So if you are somewhere in this range, 12 months से नीचे है तो वो negative count नहीं होगा बिल्कुल भी, बट वो नलिफाई कर देंगे, वो काउंट ही नहीं करेंगे, उसके मार्क्स, उसका स्कोर नहीं मिलेगा, उसकी वेटेज आपको नहीं मिलेगी, राइट? सो 12 से 36 मंथ्स के बीच का अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है, देन दैट विल बी एन आइडियल वर्क एक्सपीरियंस, एंड अगर रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस है तो और भी बल्ले बल्ले हो जाएगी, ठीक है? बट अगर इररेलेवेंट है, जैसे जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था, तब भी आपको पॉइंट्स तो डेफिनेटली स्कोर करने को मिलेंगे, बट वो जो ग्रुप डिस्कशन के टाइम पे, इंटरव्यू के टाइम पे स्पेशली, जब वो क्वेश्चंस पूछना शुरू करेंगे तो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है. सो मेक श्योर दैट यू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द स्पेशलाइजेशन दैट यू आर गोइंग टू सेलेक्ट ड्यूरिंग योर एमबीए, राइट? नेक्स्ट थिंग इज, अगर आपके पास डेफिनेटली लाइक रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है तो वो आपको पर्सनल इंटरव्यू के टाइम पे, एंड इट विल हेल्प यू ड्यूरिंग द प्लेसमेंट्स आफ्टर एमबीए, राइट? सो सबसे पहले अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, सो फर्स्ट ईयर, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर जो आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है, तो आपकी जो वर्क एक्सपीरियंस है वो इंटर्नशिप्स में हेल्प करेगा, एंड देन आपकी जो फाइनल प्लेसमेंट है वहां पे भी आपकी हेल्प करेगा डेफिनेटली. बट वंस अगेन अ बिग स्टार टू दिस, ठीक है, इट इज नॉट मैंडेटरी टू हैव वर्क एक्सपीरियंस. एडवांटेज है ऑब्वियसली यार, कुछ एक्स्ट्रा किया है तो एडवांटेज तो मिलनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि अगर मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस है देन आई एम एट अ डिसएडवांटेज. नेगेटिव नहीं है, इट विल बी न्यूट्रल, बट डेफिनेटली जिसके पास वर्क एक्सपीरियंस है उनको थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट्स स्कोर करने को मिलेंगे. ओके, नाउ मूविंग आवर फोकस टुवर्ड्स फ्रेशर्स वर्सेस वर्किंग प्रोफेशनल्स, राइट?
सो फ्रेशर्स के साथ क्या क्या हो सकता है ड्यूरिंग द इंटरव्यू, वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ क्या क्या हो सकता है। तो ऑब्वियसली इफ आई एम अ फ्रेशर, आई एम अ फ्रेशली ग्रेजुएट, और या फिर जस्ट मैंने अभी एग्जाम्स दिए हैं या फिर मेरे फाइनल एग्जाम्स अभी बाकी हैं, आई एम इन द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, so obviously I will not expect any questions which are related to the work experience. I have zero work experience, so they'll be probing me accordingly, right? So if you are a fresher, so you need strong academics. This is one of the biggest parameters on which you will be evaluated. ठीक है ना? सो आपने लास्ट 3 years ऑफ ग्रेजुएशन, लास्ट 4 years ऑफ ग्रेजुएशन में क्या किया है, कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या हैं, व्हाट इज योर प्रोफिशिएंसी इन दो सब्जेक्ट्स। लेट्स से आपने यू आर फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड, आपने बीकॉम किया है, राइट, आपके पास कॉमर्स था, एंड यू आर नॉट गुड इन अकाउंट्स, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू ब्रश अप योर academics, because if you are a fresher, you are expected to be asked questions from your last 1 or 2 years of graduation, right? Now work experience candidates जो होते हैं, इनका जो इंटरव्यू होता है, that is in the direction of what they have achieved in the last 1 or 2 years while they were working. Okay, so work experience, during the work experience, if you have worked on a particular project with a particular client, so you may be asked questions on all those things. I'll be making a separate session on all these things कि भाई फ्रेशर हो तो आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, 1 year का वर्क एक्सपीरियंस है, 2 year का वर्क एक्सपीरियंस है, 3 year का वर्क एक्सपीरियंस है, तो आपसे किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, राइट? So these are two different like directions in which the interview may go, depending upon if you are a fresher or having a work experience. But both these people have equal chances if the profile will fit in, if you are able to justify things during your personal interview, right? Now the next thing is smart form filling strategy. अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में मैं बार बार रेफर कर रहा था। अब जनरली लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि यार अभी एमबीए करना है, फाइन, एमबीए में तो 20 लाख का खर्चा होगा, तो फॉर्म्स में ज्यादा खर्चा नहीं करते। सो व्हाट दे डू इज दे जनरली टेंड टू फिल अप 2 or 3 फॉर्म्स और मैक्सिमम 5, और दे हैव अ कैपिंग ऑन द नंबर ऑफ फॉर्म्स इन द नंबर ऑफ कॉलेजेस इन विच दे आर अप्लाइंग फॉर। मेरे हिसाब से ये जो भी कैपिंग है, ठीक है यार, कैपिंग होनी चाहिए, बट इसको थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो, राइट? We should not be conservative in this. Okay, so what you must do is, we have discussed different categories, different tiers of these colleges. You must apply across all the tiers. All right, सारे नहीं तो 2 या 3 tiers में तो apply करो. For example, let's say you are expecting your percentile to fall in this range. Okay, so green is what you are expecting, right? So I would say that you would be slightly positive about your percentile. ठीक है, तो आपने एस्टिमेट किया कि यार 90 से 95 आ जाएगी, तो आपने 90 से 95 की रेंज के कॉलेजेस फिल कर दिए। बट व्हाट इफ आपका परसेंटाइल 96 आ गया, 97 आ गया, राइट? ओके, सो थोड़ा सा पॉजिटिव अपनी परसेंटाइल को एक्सपेक्ट करो, राइट? सो थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट करो। So if you have applied, let's say 5 to 6 colleges in this range in which you are expecting your percentile, तो अब क्या करो, 95 प्लस के 2 to 3 colleges और अप्लाई कर दो, ठीक है, राइट? जस्ट टू बी ऑन सेफर साइड। तो अगर आपकी परसेंटाइल थोड़ी सी ज्यादा आ जाती है, देन एटलीस्ट आपके पास कुछ अच्छे कॉलेजेस होंगे जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो, जिससे आपको कॉल आ सकता है। ऑल्सो डू नॉट ओवर एस्टिमेट योरसेल्फ, अपने आप को ओवर एस्टिमेट भी नहीं करना कि यार 90 से 95 परसेंटाइल आ रहा है, ठीक है यार, हम इससे नीचे के कॉलेजेस में नहीं जाएंगे। आज आपकी साइकोलॉजी, आज आपकी थिंकिंग ऐसी है, बट यू नेवर नो, आज से 1 महीने बाद, आज से 2 महीने बाद, व्हेन यू विल सी योर फ्रेंड्स गेटिंग एडमिशंस इन डिफरेंट कॉलेजेस, तो आप कहीं रिग्रेट ना करो कि यार काश मैंने वो वाले कॉलेज में भी अप्लाई कर दिया होता, राइट? सो
To be on safer side, select few colleges in the range of 85 to 90. ठीक है, अब ये कॉलेजेस सेलेक्ट कैसे करने हैं मैं ये भी बताऊंगा. तो सेलेक्ट फ्यू कॉलेजेस, लेट्स से 2 or 3 कॉलेजेस इन दिस रेंज ऑल्सो, अगेन टू बी ऑन सेफर साइड. ठीक है, राइट. सो अकॉर्डिंगली डिसाइड कि आप जिस भी कैटेगरी में, जिस भी परसेंटाइल कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, कुछ कॉलेजेस उसके ऊपर वाली कैटेगरी, कुछ कॉलेजेस उसके नीचे वाली कैटेगरी में अप्लाई कर दो. राइट, ठीक है. नाउ criteria of selecting the colleges. Now, one is very simple. It should be based on your percentile or score. ठीक है. The second parameter can be based on the specialization. तो भाई मुझे फाइनेंस करना है बट कॉलेज फाइनेंस ऑफर ही नहीं करता, तो व्हाई वुड आई अप्लाई फॉर दैट कॉलेज? राइट, सिंपल सा बात है. राइट. The next thing is the geography. So while you are applying for these backup colleges, तो अब आप क्या कर सकते हो? Let's say you are living in Delhi NCR region, तो आप क्या कर सकते हो? ये जो बैकअप कॉलेजेस हैं ये दिल्ली एनसीआर रीजन से अप्लाई कर सकते हो. राइट, ठीक है. इफ यू आर लिविंग इन वेस्ट इंडिया, लेट्स से मुंबई, महाराष्ट्र में रहते हो, तो आपके बैकअप कॉलेजेस क्या हो जाएंगे? वहां के हो जाएंगे, जैसे गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वेलिंगकर, केजे सुमैया, इस टाइप के कॉलेजेस. राइट. सो these backup colleges can depend on the geography as well. So these are some criteria, some parameters that will help you in selection of these colleges. All right. Now, last thing is the common mistakes that we must avoid. So सबसे पहले हम क्या करते हैं? Generally sectional cutoffs को ignore कर देते हैं. So there are some colleges जहां पे sectional cutoffs भी हैं. सो हम सिर्फ ओवरऑल कट ऑफ चेक करते हैं हमारी, दैट वी आर क्लियरिंग दी ओवरऑल कट ऑफ्स, बट वी फॉरगेट अबाउट द सेक्शनल कट ऑफ. ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यार मेरा एलआरडीआई सेक्शन इतना अच्छा नहीं हुआ, या फिर वर्बल आरसी में आई एम नॉट स्कोरिंग अबव 70 परसेंटाइल एंड ओवरऑल मेरा 98 99 आ रहा है. राइट. सो अंडरस्टैंड द सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ ईच एंड एवरी कॉलेज जहां पे आप अप्लाई कर रहे हो. डू दे हैव सेक्शनल कट ऑफ्स और नॉट? The second thing is we apply too few colleges. So अभी हमने डिस्कस किया कि जिस कैटेगरी में, जिस रेंज में अप्लाई कर रहे हो, उसके ऊपर वाली रेंज और उसके नीचे वाली रेंज में से भी कुछ एडिशनल कॉलेजेस कर दो. Now let's say you have a budget for 5-6 colleges here, 2-3 colleges here, 2-3 colleges here. Now understand the amount of expenses on application forms is very less in front of your MBA फीस. जनरली आजकल जो भी कॉलेजेस हैं जहां पे लाइक प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूं, आईएम्स की बात करूं, जिस भी कॉलेज की बात करूं, जनरली द फी स्ट्रक्चर इज अबव 20 lakhs फॉर द एंटायर 2 years. नाउ in front of that 20 lakhs that you'll be spending for your MBA, right? To do that, if you spend 20,000 extra on filling up these forms, then इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा. So I would say that अगर कुछ नंबर डिसाइड कर लिया है तो एक दो एक्स्ट्रा भी फॉर्म्स फिल कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. राइट. नाउ द लास्ट थिंग इज योर पुअर पीआई प्रिपरेशन. भाई कैट की परसेंटाइल आ गई अच्छी, 99 परसेंटाइल आ गई, 95 परसेंटाइल आ गई, जितना एक्सपेक्ट करते थे उससे बेटर परसेंटाइल आ गई. ना हम उस परसेंटाइल के हैंगओवर में पीआई की प्रिपरेशन, जीडी की प्रिपरेशन को भूल ही जाते हैं. हम सोचते हैं कि यार छोड़ो, कैट का इतना अच्छा स्कोर है, अब तो कन्वर्ट हो ही जाएगा. नो, दिस इज अ मिथ. कैट की परसेंटाइल इज एनफ टू टेक यू टू दैट लेवल. सेकेंड स्टेज में आपको पहुंचा दिया, बट सेकेंड स्टेज इज अ रिजेक्शन राउंड. इट्स नॉट अ सिलेक्शन राउंड. कैट इज अ सिलेक्शन राउंड. कैट में आपका सिलेक्शन हो गया, आपका नेक्स्ट स्टेज के लिए आप पहुंच गए हो वहां पे. बट नाउ बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इन द सेकेंड स्टेज, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू, वैट, यहां पे आपका रिजेक्शन हो सकता है irrespective of your CAT percentile. If you will poorly perform in this stage, then you will definitely be rejected. Okay, so make sure that your PI preparation is up to the mark. So what you have to do as the final advice if you are a CAT 2025 aspirant, so your percentile has opened the doors for you, but your poor preparation for GDPI
may close each and every door that is open for you. So, important tip is start preparing for group discussion and personal interview as soon as possible. That means from today. ठीक है? Next is stay realistic and make a proper strategy that will help you in basically entering those doors which are already open for all of you, right? So अब इसका मतलब क्या है? Realistically हमें behave करना है and strategy क्या बनानी है? So let's say you are expecting a call from नारसी मुंजी मुंबई campus. अब नारसी मुंजी मुंबई कैंपस का जो प्रोसेस है उसको स्टडी करो, डोंट बी डायरेक्शनलेस। तो जो नारसी मुंजी मुंबई के लिए रिक्वायरमेंट है, जो प्रोसेस होता है, सो एक्ट अकॉर्डिंग, प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर प्रोसेस एंड डोंट बी डायरेक्शनलेस, राइट? So friends, that is all from my side for this session. I hope all of you have understood the message that I wanted to convey to all of you, and you will start acting accordingly. So all the very best. I'll see you again. Have a good day. Bye bye.